हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JH टेक। और JH टेक की आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है? Singleton design pattern is a creational design pattern that lets you ensure that a class has only one instance while providing a global access point to this instance. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक डायग्राम है जो इसकी वर्किंग शो कर रही है। अब जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द सिंगलटन पैटर्न सॉल्व्स टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम वायलेटिंग द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स। अब इसमें जो पहला प्रॉब्लम है, सिंगलटन जो है वो कौन सा सॉल्व कर रहा है? Ensure that a class has just a single instance. Why would anyone want to control how many instances a class has? The most common reason for this is to control the access to the same shared resource, for example, a database or a file. Here is how it works. Imagine that you created an object but after a while decided to create a new one. Instead of receiving a fresh object, you will get one you already created. Note, this behavior is impossible to implement with a regular constructor since a constructor call must always return a new object by design. ठीक है, तो अब ये जो है वो हम कंस्ट्रक्टर कॉल से ये वाली चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है वो एक न्यू मेथड चाहिए है, एक न्यू तरीका चाहिए है जो कि हमें सिंगलटन प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक नीचे डायग्राम है। क्लाइंट्स मे नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर वर्किंग विद द सेम ऑब्जेक्ट ऑल द टाइम। सो सेकंड जो है वो हमें क्या करता है, जो मेन प्रॉब्लम है सॉल्व करता है, प्रोवाइड ए ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू दैट इंस्टेंस। जैसे कि द ग्लोबल वेरिएबल्स दैट यू हैव यूज्ड टू स्टोर सम एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स, while they are very handy and they are also very unsafe since any code can potentially overwrite the contents of those variables and crash the app. ठीक है, तो just like the global variable, the singleton pattern lets you access the sum of the objects from anywhere inside the program. However, it is also protects that the instance from being overwritten by other code. There is another side to this problem. You don't want the code that solves the problem 1 to be scattered all over your program. It is much better to have it within one class, especially if rest of your code already depends on it. Nowadays, the singleton pattern has become so popular that the people may call something a singleton even if it solves just one of the listed problems. अब सॉल्यूशन जो है वो क्या दे रहा है, अब जाते हैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ। जो सिंगलटन है वो क्या सॉल्यूशन दे रहा है? All implementations of the singleton have these two steps in common. Make default constructor private to prevent other objects from using the new operator within the singleton class. Create static creation method that acts as a constructor under the hood. This method calls the private constructor to create the object and saves it in a static field. All following calls in this method return the cached object.
रियल वर्ल्ड में इसका जो है रियल वर्ल्ड एनालॉजी इसकी क्या है? द गवर्नमेंट इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ द सिंगलटन पैटर्न. All country can have only one official government regardless of the personal identities and the individual who form the governments. The title, the government of X, is a global point of the axis that identifies the group of the people in charge. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू पैटर्न के साथ. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.